फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers here watching the Cricket Next YouTube channel, and we are here day one of the fifth test in Dharamshala. Second session has just got over. We are at the tea break, and what a session this was for the Indian team. England as of now is on 194 at the loss of 8 wickets, and there's this one guy we have been talking about for a long time now. And unfortunately, the debate with his name comes whether he should be in the 11 or not if he'll perform or not, because उनकी 11 में लेके जगह को काफी सवाल उठते हैं. But he did play today, and Kuldeep Yadav, another fifer amongst the Himalayan ranges, the Dhauladhar Hills, and what a performance by the Indian bowling lineup. And to talk more about this session, I have with me Jamie Alter and Taus Rizvi. Jamie, Kuldeep Yadav, I mean, the way, obviously, the amount of wickets that he took a fifer, and then the way he took those wickets, those spins, especially to Zak Crawley, what a delivery. What do you have to say about Kuldeep and his performance? I'm so glad that the overcast gloomy conditions stayed away like Sahil predicted. I'm so glad that they did not deviate from the plan. We discussed yesterday that conventional logic would dictate that आप उसी formula के साथ चलो जो आप तक आपको यहाँ तक सफलता दे चुकी है. So I'm very glad that Kuldeep was persisted with. Is it a surprise that he's the one who's walked off with 5 wickets? It should not be, because we've discussed this now for 3-4 shows. Going back to 2017, इनका debut इसी धर्मशाला ground में हुआ था. He got 4 wickets. He used the bounce. He got purchase. और David Warner वाला dismissal मुझे अभी भी याद है. Again, on a day when Ashwin got 2 wickets down the order, on a day when the bounce, like we discussed, was not much, that he's come and taken 5 wickets. Hats off to him. अब क्या है कि अब we can start ask the question कि क्यों 7 साल में कुलदीप को सिर्फ 12 टेस्ट मैच दिए गए हैं, right? I can never forget 2019 controversial decision. अश्विन को बाहर किया सिडनी में और कुलदीप को खिलाया गया था. He took 5 wickets. This was 5 years ago. Shastri said ये हमारा number 1 overseas spinner है. पिछले 5 साल में he's played 1 test match, that too just across, in Bangladesh. Let's hope that अब the team has moved beyond Akshar Patel, because while I'm a massive fan of what he does with the bat, the point is आपको wickets लेने पड़ते हैं. कुलदीप खेल रहे हैं क्योंकि अक्षर ने 2 मैच में विकेट नहीं लिए. Let's hope, and I fully understand कि ऑस्ट्रेलिया में 2 स्पिनर्स मुश्किल है, तो ये तो हमारे तीसरे स्पिनर है. But at some point, you're going to have to accept that this guy is a wicket taker. 12 टेस्ट मैच कंप्लीट नहीं हुए, 50 विकेट ले चुके हैं. I know कि हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं, जब तक अश्विन जडेजा है, he will not play overseas test matches. But he's only 29, going on 30. 5 साल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. Absolutely outstanding. Forget the fact that he's gone for 5 or over. Irrelevant. He's taken wickets यार. कहां से हमने शुरू किया था कि गिफ्ट दिया था हमने वो 2 विकेट, उसके बाद कोई गिफ्ट नहीं यार. That Zak Crawley ball. What are we saying कि भैया क्रॉली का 100 ड्यू है? That for me was the wicket of the match. बहुत बाकी इस मैच में, but that ball to pitch, we all saw it यार, pitched here. Guy goes for a cover drive, not even near the ball, और जो अंदर कट भाई साहब, lovely dismissal. Absolutely, and I was reading somewhere it turned around 10.9 degrees. Well, I don't know if that stat is true or not, but with the naked eye, it looked like it spun a lot. And what a delivery, Jaffa, as we say. That was by Kuldeep Yadav, as Jamie said. What a performance! 5 wickets. Yes, went on for 72 runs, but the wickets that he gave you. What do you have to say about his performance so far? I mean, I'm surprised to नहीं. Awesome, great, मजा आ गया. I mean, Zak Crawley was the ball of the day, I would say. I mean, apart from that, Jasprit Bumrah and all. I mean, the way he invited Zak Crawley front foot पे, I mean, he was playing well, by the way. Zak Crawley बहुत अच्छा खेल रहे थे. But वहाँ से उनको confidence down नहीं हुआ कि यार he's playing me well. But then he kept on inviting him on front foot, which worked at the end of the day. और फिर खत्म उनका dismissal bold कर दिया. Kuldeep
आई वुड से लाइक बहुत सारा ऐसा फैक्टर रहता है कि यार फर्स्ट इनिंग में ज्यादा मार खा जाते हैं, या थोड़ा ऐसा रहता है कि यार वो चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली बैटिंग कंडीशंस होती हैं फर्स्ट डे में. बट दिस कंप्लीटली सरप्राइज मी. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग द विकेट टू बी टर्निंग सो बिग. आई मीन इतना टर्न मिल रहा है, या कुलदीप टर्न कर रहे हैं अपने रेस्ट के थ्रू, दो स्ट्रॉन्ग रेस्ट, या विकेट में टर्न है. अश्विन इतना ज्यादा टर्न नहीं कर पा रहे हैं, जडेजा ऑब्वियसली इतना नहीं करते, बट देन कुलदीप, आई मीन kudos to his wrist, the way he's turning the ball, and also the control part of it. It's very very important. If you're getting the turn, control is as important. You have to be disciplined, accurate. और जिस तरह से उन्होंने किया है, डिलीवर किया है, सिंपली अमेजिंग. अभी यहाँ पर एक व्हाट्सएप पे सवाल उठा था कि भाई ग्रुप में कि भाई मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनता है, कुलदीप या यशस्वी जायसवाल. तो अभी भी मैं यशस्वी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि कुलदीप, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्लेइंग इन इंडियन कंडीशन, स्पिन फ्रेंडली, बट देन आज का फर्स्ट डे ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस कुलदीप यादव का, तो एटलीस्ट मैन ऑफ द मैच तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया उन्होंने पहले दिन ही. और 198 for 8, nobody expected. I didn't expect, यार. I thought Joe Root will do some repair in the damage that has been done, but नहीं हुआ कुछ भी. Lovely bowling. Yeah. Pretty disappointing from, especially from the England batting lineup and the way they collapsed. But Jamie, I have to talk about this one batter in the England lineup, and especially considering the fact that he is the captain of the team, Ben Stokes. Horrible performance with the bat throughout the series. He didn't take charge in any of the test matches. He didn't lead from the front, and he is a good batter, but he was exposed throughout the series. What do you have to say about Ben Stokes and his performance now throughout the series? Because more or less, I guess one more innings he'll get. No, I said this before the series. If like widely expected, बेसबॉल नहीं चलता है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बेसबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला था, सबसे बड़ा चैलेंज था. I said if baseball goes bust or it gets smashed, whatever adjective you want to use, legacies and reputations are going to be questioned. और कायदे से सवाल उठना बनता है, right? We're getting to that stage now where we know okay, it was good fun, but Hyderabad was so far behind. और हाँ, इस टीम ने 2017 के बाद से वो किया जो कोई टीम यहाँ पर नहीं कर पाई. दैट इज कंसिस्टेंटली हर मैच में 1, 2, 3, 4 पीरियड के लिए इंडियन टीम को प्रेशर में डाला. बट द पॉइंट इज दे आर ऑन कोर्स टू लूज 4-1. व्हेन यू लूज 4-1 एंड दिस इज योर 3rd, 4th, 5th टूर ऑफ एशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट बेन स्टोक्स, अब आपके लेगेसी और आपके रेपुटेशन पर सवाल उठेंगे. जब चल रहा है कैप्टनसी, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट, बट द पॉइंट इज उस 70 के बाद हिज फॉर्म हैज ट्रेल्ड ऑफ. यदि ये इस इंसान का पहला टूर होता, मैं बोलता ओके राइट, दिस इज he's played some 15 टेस्ट मैचेस इन एशिया, राइट, ये बंदा 100 लगा चुका है. बट he got 41, he got 47, but those 41s, 47 kind of, they don't count because we're talking about the greatest seam bowling all-rounder of this generation. 41, 47 से काम नहीं चलेगा. और more than the 41, 47, मैं कहूंगा कि look at this graphic, this picture. पूरा सीरीज जब भी आउट हुए, चाहे डक पे हो या 70 पे हो, इसी सिनारियो में बंदा आउट हुआ, going back. You should just not be going back, so you have to question his attitude, you have to question his technique. This is Ben Stokes, but when you have an average of 28 in Asia, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में भी आप खेल चुके हो, आप 28 की एवरेज लेके खेल रहे हो, और एवरेज से ज्यादा if you get down to brass tacks, and I love that the producer has put this picture. This picture, it could be from any of the test matches. Just swap the keeper. आज जुरेल है, पहले 2 मैच में KS भरत थे. This graphic of him being pinned on the back foot. चलो एक बार रांची में बॉल यहाँ रहा, एक बार, but the amount of times he's looked at the pitch, बुमराह ने 2 बार उनको बोल्ड किया था हैदराबाद और विशाखापट्टनम में. Too much, boss. And I'm being critical because we're talking about Ben Stokes here, I'm just surprised that he's still going back. Back foot pe mat jao na, kyun ja rahe ho? So absolute colossal failure as a batsman this series. Absolutely. And Tausbhai, along with Ben Stokes, there's another batter that I would like to talk about, and that is Jonny Bairstow playing in his 100th test match.
And I honestly, I've seen debates on social media asking how can Jonny Bairstow play 100 Test match with the kind of batting that he has in red ball cricket. He has performed. He had a very amazing purple patch few years back. The way he was scoring runs, centuries after centuries, but he was all exposed throughout this series. What do you have to say about Jonny Bairstow as a batter? Jonny Bairstow, of course. I mean, I'm his big fan here. I mean, the way he bats, at least in limited overs. T20 Test cricket, mein, he has been disappointed in this series so far. I mean, I'm very upset. He should have been on the baz ball. अगर बात कर रहे हैं तो फिर Jonny Bairstow का role बहुत ज़्यादा important था. But then he hasn't delivered the way he should have been. But then kudos to these guys, यार. I mean, he has not let them. These guys have not let him settle in these conditions, in the conditions that matters, where there is a lot of struggle. So I mean, यहाँ पर देखिए Ben Stokes again. मैं बताऊंगा कि जेमी भाई Ben Stokes obviously you बार commit कर रहे हैं mistake. These guys are not learning from what they did in the past. Wrong error जो थे. I mean, एक बंदा होता है जो सीख के जाता है, जो repeat नहीं करता है mistakes और बार मतलब अपने आप को improve करता है. But these guys are not learning. तो बेयरस्टो का भी वही सीन चल रहा है. I mean, आपने देखा अगर फ्रंट फुट पे अच्छा डिफेंस करते हैं, बट देन वो डिफेंस भी जो रहता है अगर आपका, तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं, इतना कॉम्पैक्ट नहीं. जिस तरह से बैटर है वो, जिस तरह से पहले पैर आता है, फिर बैट आपका उसको कवर कर लेता है, जहां पर चांसेस रहते हैं कि आप या तो एज हो जाए या तो फिर आप सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग पे जाए या तो लेग बिफोर हो जाए. तो आपका अलाइनमेंट बराबर नहीं यार. आपका जब फ्रंट फुट पे आते हैं या बैक फुट पे खेलते हैं तो आपका बैट पहले रहता है, पैर पीछे रहता है. That is not how it works. And I don't know. I mean, इतना टाइम दुबई में रहने के बाद, यूएई में प्रिपेयर करने के बाद, these guys haven't worked on that kind of technique. उनके साथ कौन था? कोई इंडियन कोच था who was help? दिनेश कार्तिक. I mean, कितना बताया दिनेश कार्तिक ने? I'm surprised यार, क्योंकि he's a wicket keeper. He's been a batsman. He should have informed them how to play on these kind of conditions. I'm surprised. And Bairstow, I'm very disappointed. Bairstow यार, what a batsman he is. T20 cricket में at least for Sunrisers, whatever he did. This is I'm unhappy with Bairstow basically. Absolutely. No, we've seen white ball cricket, there's no debate. He is a very gun batter. He scores quickly, he scores a lot of runs. But in red ball cricket, lately he has been really out of form. Jamie, what are your thoughts on the pitch, the way it has acted up till now, the two sessions? Do you think, is it the Indian spinners and their unreal skills that they have been able to have purchased on this kind of a wicket, which is sort of still batting friendly, or do you think कि इतनी batting friendly नहीं है जितना कहा जा रहा था इसको सुबह से? No, I will stick to what we discussed in the previous show. This is a batting friendly wicket. Look, take nothing away from what Kuldeep Yadav has done. आपको कुछ करना था, right? And he's putting his shoulder. You can see him, you can hear him. He's putting a lot of efforts to get something, right? हमने पहले भी discuss किया था lunch break show पे कि there are some questions भी आए थे viewers से कि the lack of bounce, they've not pitched the ball up. It's not surprising that Pacers were not used so much in this session because it still is a batting friendly wicket. Again, no disrespect. Toz bhai ne bhi kaha tha, we discussed it, the lunch break. Duckett gave his wicket away. Matlab, juicy wicket diya. Ollie Pope gave his wicket. How many of these were earned? Chalo, Zak Crawley, brilliant dismissal, right? But a lot of these were just the shots. Again, this is just my view here. A lot of them were shots of players who they want to go home. They're finished, right? Kuldeep के दो dismissals को छोड़ के कोई बेहतरीन गेंदबाजी तो नहीं रही, right? Jonny Bairstow, this is his 9th innings. I think of 9, 5 बार शायद LBW या 2-3 बार bold हो चुके हैं, right? So, like Tosbhai said, when you're committing the same mistakes, it makes the job of the bowling team easier, right? अब क्या है, बैटिंग विकेट को हटा दो. ये आधे लोग तो वॉकिंग विकेट्स हैं, राइट? बेन स्टोक्स, व्हाट डिड ही गेट? ही गॉट अ डक. Like I said, remove the bowler, remove the keeper. That could have been Visakhapatnam, it could have been Hyderabad, it could have been Ranchi, it could have been Rajkot. The impression or the image, the visual of Ben Stokes going back and getting LBW or bowled once when the ball dipped off his bat, it's too much, you know. So now that the series is on the verge of being completed, you have to now question. There you go, on cue. What I was saying, baseball has become a joke. No application. Yehi to main keh raha hu, right? Yes,
Kuldeep fully deserved his 5 wickets. One brilliant ball of the match. मैं तौस भाई की बात से सहमत हूँ. He should be the man of the match, and probably, in fact, I'm not part of the WhatsApp group that Tozba is talking about, but I had the same thought. Is this guy actually a viable candidate for man of the series? Sochne ki baat hai, right? So but again, to sum it up, it just looks like a team of zombies who they just want to go home, and I actually feel bad for the few of them who might be playing in the IPL. Rather, I feel bad for their IPL franchises, because you're going to get a few players who are going to be so mentally spent, so fatigued. Where's Jonny Bairstow nowadays? He's with Punjab, right? Yeah. I feel bad for the fans of that franchise, Yes, different format. हो सके वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करे, but the guy he's looked so horrible this series. So, yeah, I mean, it's just this team just wants to go home. Absolutely. Taus, do you agree that England now they are mentally fatigued and they are tired? Also, the fact that this series has been gone on for a month and a half now, the 10 days gap between two matches, and also they have been traveling themselves. Abu Dhabi, Wapis Ana, too much travel also takes a toll. What do you think? England batters, are they done mentally? They are professional cricketers, yeah. Done mentally. क्या Ashes 5 टेस्ट होता है. फिर यहाँ पर तो गैप भी मिला है. They've enjoyed playing golf. I mean, they were more interested in playing golf in UAE and Ahmedabad or Rajkot. Chandigarh, rather than working on their game. I mean, कितनी बार आपने उनको नेट सेशन में सीरियसली परस्यू करते हुए देखा? This is what I'm wondering. और स्पोर्ट्स फैन ने एप्लीकेशन का बोला, एग्जैक्टली एप्लीकेशन. अप्रोच आपका क्या है? अप्रोच मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा है, पहले दिन से ही नहीं लगा है. आई मीन, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. आप आईपीएल खेलते हो. बेन स्टोक्स आईपीएल खेलता है, बेस्टो आईपीएल खेलता है. जो रूट ने डाला था, पता है, एक सीजन खेला या, बट दे प्ले द 100 और मे बी द बिग बैश और कुछ ना कुछ. तो यू कैन कंप्लेन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एंड दैट लेवल. व्हेन आई मीन कंट्री की बात आती है, फिर उसके बाद पैसा भी है, you're getting everything, so you can't complain. आप जाके यहाँ से थोड़ी मजदूरी करते हो, जाके पत्थर थोड़ी उठाना पड़ता है क्रिकेट खेलने के बाद. और या आपको ट्रेन में थोड़ी वसई से चर्च गेट ट्रैवल करना पड़ता है. सो इनकी लाइफ ज्यादा टफ है. जो लोकल क्रिकेटर जो ग्रास रूट से आते हैं, मुंबई में या दिल्ली में, या ऋषभ पंत 50 किलोमीटर ट्रैवल जो करते थे. इंग्लैंड, आई मीन, आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द कोचेस, जेमी भाई, रिसेंटली इंग्लैंड से आया था, बॉम्बे बंदा, ईसीबी से एसोसिएटेड है. उसने बोला कि बहुत मतलब अच्छी लाइफ है उनकी. यहाँ पर वो आके ही वाज अमेज्ड कि यार यहाँ पर ऐसे खेलते लोग, ऐसे स्ट्रगल करते, और जिस तरह से ट्रैवल करते, जिस तरह की कंडीशंस है, 10 मैच एक ग्राउंड पे होते हैं. अगर मुंबई की बात करें तो आपस में दे डोंट नो व्हाट मैच इज गोइंग ऑन, हु इज प्लेइंग व्हिच मैच. इतना कंफ्यूजन रहता, बट दे स्टिल एंजॉय द स्पोर्ट. और आप इंग्लैंड की बात करो, आपको गोल्फ की फैसिलिटी है, आपको जिम की है, आपको शुरुआत से लेकर, बचपन से लेकर प्रोफेशनल क्रिकेट तक हर चीज अवेलेबल है, हर चीज. तो आप यू कैन नॉट कंप्लेन लाइक दिस. बेसिकली दिस इंग्लैंड वाज नॉट रियली सीरियस, और वो कभी सीरियस नहीं रहते हैं एशेस के बाहर. मुझे नहीं लगता है. वर्ल्ड कप में थे, वो तो बोलते हैं आरोप है कि एशेस के बाहर वो सीरियस नहीं रहते. और ये सीरीज उन्होंने, आई डोंट नो हाउ दे कैसे लिया, अप्रोच कितना टिमिड रहा है. या बेन स्टोक्स, ही वाज कमिंग बैक, उनको तो थोड़ा अप्लाई करना चाहिए था. ही वाज नॉट बॉलिंग भी कर रहे थे, तो मतलब नेट्स में कर रहे थे. ही वाज नॉट कीन ऑन बॉलिंग इन मैचेस. तो कहीं तो देखना चाहिए कि दीज गाइज आर लाइक वेरी हंग्री. आज भी इंपॉर्टेंट रोल था. आज अच्छा स्टार्ट देने के बाद आप इतना कोलैप्स कर गए. आई मीन, यहाँ पर आप अनलेस आप वहां पर जाके बैठ के सीरियसली नहीं बैठोगे बोर्ड रूम में कि भाई यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर, मैं मानूंगा नहीं कि ये दीज गाइज वो सीरियस फॉर दिस टेस्ट सीरीज. एंड आई डोंट नो इफ इट्स गोना हैपन और नो, बट एशेस के लिए तो डेफिनेटली उन्होंने तैयारी कर ली होगी अभी से ही. No, Ashes is something that goes on in their mind 24/7. Not just England, but also the Australian players. Well, the match has resumed, and Ben Foakes on the very first ball stepped out and hit a 4 to Ashwin. The message is clear, as Sunny is also saying. The message is clear that they'll go for runs now. Only 2 wickets left, and it's Bashir and Anderson along with Ben Foakes now. So thank you so much, Jamie. Thank you so much, Taus, and thank you so much to all our viewers. We'll see you at the stumps, and hopefully with some good news for the Indian fans, just as we have been talking about for the first 2 sessions as well. Thank you so much, Jamie. Thank you so much, Taus. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म,
क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।